Hello and assalamu alaikum to everyone. I do hope that you all are doing well and things are going well at your end. Hopefully you are enjoying your studies and things that you are learning nowadays. And I'm here with a new topic, with an important one, and I'm your teacher. As you all know myself, Fazil. And today's topic is very important. And let's see how it goes and today's topic. This topic is 19th century and after. So we will discuss today in 19th century what are the influences, what are the changes that have been made in language and spellings and passive voice, and there are various reforms as well that took place in 19th century. And during the 19th century, Britain was transformed by the Industrial Revolution. In 1801, at the time of the first census, only about 20% of the population lived in towns. By 1851, the figure had risen to over 50%. By 1881, about two-thirds of the population lived in towns. Furthermore, in 1801, a majority of the population still worked in agriculture and related industries. Most goods were made by hand, and very many craftsmen worked on their own, with perhaps a laborer and an apprentice. By the late 19th century, factories were common, and there are different things that have been happened in 19th century. So we'll discuss few things about 19th century. So for many, the 19th century was a time of profound and accelerated change, in which that the poet and writer Thomas Arnold remarked that it seems possible to live the life of 300 years in 30. So operative classes in 1831 and 2, industrialization, urbanization, as well as the emergence of new technologies and new scientific discoveries, all meant by the realities of daily life, different markedly between 1800 to 1900. Education levels of literacy level also experienced significant change. Revolutions in printing technology, moreover, meant that books and newspapers could be produced faster and more cheaply than ever before. The reinfections of the journal education. An Act of 1870 in Britain receives compulsory schooling, meanwhile, meant that by 1900 more people than ever before were able to read. As in previous eras, language serves as an admirable witness to both history and change. 19th century conflicts such as the Crimean War in 1854 are memorialized in words such as Cardigan, named after James Butterlow, servant early captain who led the charge to the Light Brigade. And there are obviously few changes have been made. 19th century का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसमें किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था, कैसे लैंग्वेज चेंज हुई, बैरियर क्या थे लैंग्वेज के, उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुई, स्पेलिंग में क्या ट्रांसफॉर्म्स आई, और पैसिवाइज में कैसे ट्रांसफॉर्म क्या क्या चेंजेस आई, मतलब कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, सारा कुछ इस लेक्चर में डिस्कस किया गया और इस स्लाइड में भी बताया गया है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया। तो 1801 में अराउंड 20% लोग रहते थे शहरों में, उस बार 1851 में ये 50% हुए, फिर उसके बाद 2/3 आबादी जो है वो शहरी इलाकों में रहते थे। फर्दरमोर इन 18 मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल वर्क इन द एग्रीकल्चर, वहाँ ज़्यादातर ज़राअत पे काम किया जाता था। ऑन देयर ओन परहैप्स अ लेबर एंड apprentice. By the late 19th century, factories were common, और एग्रीकल्चर फॉर्म जो थे वो आम थे उस दौर में। उसमें फिर कम्युनिकेशन में और कॉन्टेक्ट्स में भी लोगों के चेंजेस आए।
सोर्सेज ऑफ द न्यू वर्ड्स बोरिंग, कुछ और वर्ड्स भी ऐड हुए थे जो बोरो किए गए दूसरी लैंग्वेज से. मोस्ट ऑफ द न्यू वर्ड्स कमिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द फ्रेंच केम charmeuse and chauffeur, chiffon, carriage, etc. From Italian come confetti and vendetta, and from Spanish by the way of the United States bonanza. और ये चीज़ें वहाँ आई, कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्स्ट में भी तब्दीलियाँ आई. So while the horse drawn stage is forged, और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, by the end of the century the bus, the from igneous source, and the motor car was also in evidence. That the what exactly this now made transform should be called remained matter of a debate. तो रेलवेज में और इसमें वर्ड्स में और इन वर्ड्स में चेंजेस आई. Furthermore, I would like to discuss that in 1873 English Dialect Society was formed with the remit of gathering as such information as possible on regional English. The English Dialect Dictionary 1898 to 1905, edited by Joseph Wright, I guess, shared a similar impetus. Its 6 volumes aim to represent the complete vocabulary of all dialects. Words still in use or known had to have been in use during the last 200 years. Well, urban dialects जो थे मतलब that associated with as they were with the spread of towns, cities and industrialism, could nevertheless attract with different reactions. The legitimacy of different varieties, and furthermore therefore be a matter of marked dissent. Some writers try to provide a history and regional varieties which paralleled that of the standard variety, others insisted of the need to be special of and disused. So at the same time the global जो था reach to the English was extraordinary. 19th century was the heyday of the British Empire, which by 1900 covered 20% of the world's land surface and encompasses some 400 million people. The number of speakers of English is estimated to have been risen to from 26 million in 1800 to 126 million over the same time. तो 19th century जो था वो बेहतरीन दौर था ब्रिटिश का, जहाँ पे इंग्लिश बोलने वालों की तादाद भी काफ़ी हद तक बढ़ी, जो कि तकरीबन 400 मिलियन पीपल तक पहुंच गई. उसके बाद एस्टिमेट लगाया जाता है कि 26 मिलियन 1800 में, तो ओवर 126 मिलियन ओवर द सेम टाइम बढ़ गए, जो नॉर्थ अमेरिका और वहाँ उनके इर्द गिर्द के शहरों तक फैल गई. In American has added many other foreign words, particularly from Spanish and the language of American Indian. तो Americans ने भी बहुत सारे लफ्ज इसमें ऐड किए. The German has given us rucksack, zeppelin and zither. ये लफ्ज जो थे वो जर्मन लैंग्वेज से आए थे, जर्मन लैंग्वेज से ऐड किए गए. सो फर्दर मोर आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी और चीज़ें आई जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. उसके बाद रिकॉर्डिंग लैंग्वेज भी वहाँ इंट्रोड्यूस हुई 19th सेंचुरी में. देखा जाए तो इन द 19th century remains the first in which we are able to hear the ways in which the spoken language was actually used. Recordings of the poet Alfred Tennyson and of the nursing pioneer Florence Nightingale, for example, still preserve intact to the voices of the past. The sense that dictionaries too should record the realities of language in use rather than an idealized and nominative version of the word and meaning was to be another important shift in 1857. Archbishop Richard Shanwick's Strange delivered 2 lectures to the London Philological Society in which he stressed that the dictionary
makes was to be the historian, not a critic. In future, the dictionary marked should describe the object, facts of language rather than aiming to providing, as had to be in the case in earlier words. In a range of subjective opinion about good and bad uses, Srinvik's friends defining a good dictionary in a similar way. These are the grammatical changes and recording language as well, and these are the words that I have discussed which were borrowed from other languages. Obviously, there are spelling reforms and grammar reforms as well. In the later part of the 19th century, renewed interest was visible in the problem of English spelling, and the question of reform was vigorously agitated. For nearly 400 years, the English have struggled with their spelling. It was one of the chief problems which seems to confront the language in the time of Shakespeare, and that continued to be an issue throughout the 17th and some other eras. स्पेलिंग की रिफॉर्म्स आई और बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश स्पेलिंग के मसाइल उनके हल नहीं हो रहे थे शेक्सपियर और 17th सेंचुरी से पहले जो कुछ थे उन्होंने मसाइल हल करने में उनकी कोशिश की और ये ग्रामर में वो चेंजेस थे because it is received wisdom in the many histories of the language that relatively little change took place between the English of 1800 and that of the 20th century. The perception of 19th century speakers might well have been rather different indeed. Change on all levels of linguistic organization was apparent, whether in terms of spelling and sounds or syntax and meaning, while James Marys and his co-editors on the OIT sought, as we have seen, to the record language in all its forms, with apparent continuity, and the rise of new tenses and new words and meanings put for other writers promote highly negative reaction and overt resistance. Change from his perspective could be viewed less as evidence from the continued vitality of a lingual language, but as a generation and carelessness. तो कॉलेज उस दौर में सैमुअल कॉलेज कहता था कि I regret to see that while in a barbarous vocally talent stealing out to the newspaper into the leading reviews, most respectable publication of that day. So these are the spelling reforms that have been taken in the 19th century. Obviously, these reforms are continuing. The Bible and the numerous classic works were printed in a new spelling. And the movement across aroused constant public interest. The first practical step was to be published as a list of 300 words for which different spelling were in use. Judgment, judgment, medieval, medieval. तो बाइबल से नंबर डिस्कासिकल चीज़ से और स्पेलिंग्स को रिफॉर्म किए गए उसके बाद पहली प्रैक्टिकल जो स्टेप उठाया गया पब्लिश किया गया तकरीबन 300 वर्ड्स थे डिफरेंट स्पेलिंग्स थे उनके जैसे जजमेंट और जजमेंट उनको डिफरेंट स्पेलिंग में पेश किया मिडिवल और मिडिवल डिफरेंट स्पेलिंग्स यूज़ किए जाते वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन उसी दौर में वर्ब एडवर्ब का कॉम्बिनेशन भी आया An important characteristics of the modern vocabulary that large number of expressions like set out, gather up, put off, bring in, made up of the common verb are often of one syllable combined with an adverb. One of the most interesting feature of such as combination in modern times, however, is the large number of figurative and idiomatic senses in which they have come to be used. तो verb adverb की इम्पॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स उसमें बताई गई हैं और वो कैसे कंबाइन किया गया है उसको एडवर्ब्स के साथ उसमें ग्रामर वर्ड्स बहुत सारे ऐड किए गए थे उस दौर में सो इनोवेशन इन टर्मिनोलॉजीज वर वाइड स्प्रेड indicating the increasing precisation of
scientific inquiry and investigation. Medical evidence led to the introduction of anesthesia and anesthesiatical colon forms such as both noun and verb, as well as more fundamental tools such as stethoscope, types of illness and disease that are also classified, namely rigorous, specific, striking. It is denote different things. Obviously, this is a language of science as well. You know that. And familiar examples are being about cause are accomplish, catch on, comparing, give up, become exhausted, keep on, continue, put up with, tolerate, lay off workman, and knock down with their meanings at an action sale. And another is the extensive use, especially in colloquial speech, of these verb adverb combination as noun, blow out, hold up, run away. दो इसी तरह उसकी कंटिन्यूशन की गई वर्ब एडवर्ब की, और उसे ही फर्दर जाके साइंस ऑफ लैंग्वेज भी कहा गया. साइंस also change approaches to language. If Samuel Johnson in the 18th century could refer to the dusty deserts of philosophy, which the hope his dictionary might be able to, and even with the venture and the flowers, 19th century philology, the historical study of the phonology and morphology of language, instead marked out the scientific and empirical method which increasingly characterized in the study of language too, a range of ologies specific to language such as dialectology, phonology, morphology, and the course of lexicology, and the branch of knowledge which states of words, their form, history, and meaning, would all also make their appearance at this time. I am a scientist of language, as James Morey कहता था कि मैं scientist of language हूँ. Editor chief भी था वो, informed me, and continue appearing. Formal study now required analytical language, methodology, and system of the things that required. Active passive भी उसी दौर में इंट्रोड्यूस हुए. Active voice आप सबको पता है कि voice is said to be used when the subject acts and sentence. Because the subject does the action, it is called active voice. Example: has completed and we my homework. Verb. Here the subject does the verb I. Aditya is riding the bicycle. Everybody is saying it has PPT. तो ये एक्टिव वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली काम करता है, एक्टर होता है, वो डूअर होता है. There are a few types as well, types of passive voices. Passive voice as well as active voice can be divided into various verb forms according to tense used in sentence. In this PPT, we will discuss about the passive voice forms given to the book. There are few types as well, like present passive, simple past passive, present perfect passive, future passive, models with the passive. Obviously, आप जानते हैं सारे passive voice के बारे में. These are a few types that I have mentioned especially on this slide to let you know that in 19th century the passive voice have been introduced. And another is pigeon. आप ये पढ़ेंगे कि pigeon क्या है. Some of the geographical meaning for pigeon are different meaning लिए गए हैं pigeon के, और मुख्तलिफ ममालिक में उसके अलग meanings हैं. In Chinese means business. In Portuguese means job or occupation. In South American language means people. In Hebrew words barter. तो चाइनीज़ में इसको बिजनेस कहा जाता है. उसके बाद पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में इसको जॉब या ऑक्यूपेशन कहा जाता है. साउथ अमेरिकन में इसको पीपल कहा जाता है, और हिब्रू ज़बान में इसको बार्टर कहा जाता है. So let's see what is the definition of pigeon. Pigeon is a simple speech form used as a means of communication among people who do not share a common language. तो pigeon आपको सिंपली तरीके से बताऊं
कि ऐसी सिंपल स्पीच है उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है लोगों में, ऐसे दो लोगों में जो एक कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी एक सिमिलर लैंग्वेज नहीं होती है, उसको पिजन कहते हैं। आगे है क्रियोल। क्रियोल इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीन्स नेटिव टू अ लोकेलिटी और कंट्री। तो क्रियोल जो है वो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है मकामी या इर्द गिर्द कंट्री का कोई। डेफिनेशन, क्रियोल इज़ अ स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम अ पिजन। क्रियोल जो है वो स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज है जो पिजन से डेवलप होती है। अब मैं बताऊं पिजन क्या है। पिजन ऐसी लैंग्वेज है दो लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते, उनको समझ नहीं आती उसकी लैंग्वेज, उसको उसकी लैंग्वेज, तो वो एक नई लैंग्वेज एक अपनाते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो वो जो लैंग्वेज नई बनती है उसे क्रियोल कहते हैं। होपफुली नाउ यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब इसकी हिस्ट्री क्या है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेम्पररी इवेंट्स। अब मतलब वो टेम्पररी जो इवेंट्स हुए हैं वहाँ से ये मतलब ये पिजन और क्रियोल बने। लाइक टेम्पररी इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, ट्रेड हो सकती है, सी फार फेरिंग एंड टूरिज्म, तब जाके ईजाद हुई है। ट्रोमेटिक सोशल सिचुएशन, जैसे बीमारी की ऐसे अलामत सिचुएशन होती हैं, ऐसी सोशल सिचुएशन होती है, वार हो जाए, स्लेवरी हो जाए, आप कैद हो जाए कहीं या जंग लड़ रहे हैं, उस सेंस में भी ये पिजन और क्रियोल की हिस्ट्री बयान की है, तब ये वहाँ से वजूद में आती है। एंड ऑब्वियसली देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन, अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल, वो कहता है बहुत सारी ज़बानों से मिलकर ये बनी। एंड अनस्टेबल ग्रामर, तो उसकी एक ख़ास कोई ग्रामर भी नहीं है। सोशली लिमिटेड, तो सोशली तौर पर ये मखसूस या एक छोटी मतलब पैमाने पर एक ज़बान। नॉट अ मीन ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, वो कहता है कोई ऐसा ख़ास ग्रुप नहीं है जो ये लैंग्वेज बोलता है, जो इसकी वो उस ग्रुप की पहचान हो कि ये ग्रुप की ये ज़बान बोलता है। शॉर्ट लिव, थोड़े टाइम के लिए होती है। सोफिसेंटिक्स होते हैं, नो एफेक्सिक्शन उसमें नहीं होती है, कोई वर्ड्स ऐड कहते हैं जैसे तो वो नया वर्ड बनता है। लिमिटेड विकेबलरी, उसकी विकेबलरी भी लिमिटेड है। ये इसकी खसूसियात है पिचिंग की। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रियोल, क्रियोल की क्या खसूसियात है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंडेड पिजन, ओके, ऐसी प्रोडक्ट है वो पिजन को आगे बढ़ाती है, एक्सपेंड करती है। नेविटाइजेशन है उसमें, और उसके बाद कंसिस्टेंसी है, वो लगातार रहती है पैटर्न के तहत। स्टेबल उसकी ग्रामर है। एक्सपेंडेड वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम के तौर पर है। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है। लॉन्ग लिव्ड है, अटेंड अनदर लैंग्वेज, वो कहता है कि एक ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाली लैंग्वेज है, अटेंड मदर टंग, तो उसको एज ए मदर टंग भी अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्लाइड। There is obviously a little comparison between Pidgin and Creole. No native speaker. तो पिजन की कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं है। इसके मकामी लोग हैं बोलने वाले, क्रियोल के नेटिव स्पीकर्स हैं। नो लैंग्वेज, इसको ज़बान नहीं तस्वुर किया जाता क्योंकि ये पहली ज़बान नहीं है, ना मदर टंग है, ना कुछ है, उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्रियोल जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है लोगों की। सिंपल स्ट्रक्चर है, सादे अल्फाज में लिखी जाती है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्रियोल का। नो आइडेंटिफिकेशन, उसकी कोई पहचान नहीं है पिजन की। हैव आइडेंटिफिकेशन, और क्रियोल की एक पहचान है। पिजन जो है वो अनस्टेबल होता है और क्रियोल जो है वो स्टेबल होता है। इज़ अ लिटिल कंपैरिजन बिटवीन दिस टू थिंग्स, पिजन एंड क्रियोल। होपफुली आपको समझ आ गया हो। By saying these words, I will conclude my presentation today. Marginal languages born unconsciously from interlinguist social communication. क्योंकि तो कम पैमाने पर और कभी भी ये वजूद में आती है, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, और उनके पास कोई खसूसियात होती है। हैव जोग्राफिकल एंड सोशल अफेक्शन, उनकी कोई सोशल अफेक्शन भी होती है और इलाकाई पहचान भी।
आर सिस्टमेटिक एंड कैन बी इन्वेस्टिगेटेड और लर्न। वो कहता है कि सिस्टम के तौर पर ये सिस्टम होता है सारा इसका, इसकी तहकीक भी की जा सकती है और उसको सीखा भी जा सकता है। सो दैट इज़ what I have today for you. Thanks for your attentions. Thank you very much for listening this lecture, and hopefully you will learn it when you listen to it. Thank you.